टॉपिक्स कर लिए हैं। पार्टिसिपेंट्स ऑफ द रिवोल्ट, कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं बिगनिंग ऑफ द रिवोल्ट से, ठीक है। सो क्लास ओपन अप योर बुक्स एंड विल स्टार्ट। बिगनिंग ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। The soldiers so far were simply protesting against the use of the greased cartridges, but the government neglected their protest, insisted on the use of cartridges and punished those who refused to obey them. ठीक है, हमने पिछले क्लास में देखो डिस्कस किया था कि ग्रीस कार्ट्रिजेस यूज़ होती थी, ठीक है। तो दैट वर अगेंस्ट द रिलीजियस बिलीफ ऑफ हिंदूज एज वेल एज द मुस्लिम्स। ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे सोल्जर्स कि वी डोंट वांट टू यूज़ दीज ग्रीस कार्ट्रिजेस, मगर ब्रिटिश रिफ्यूज टू हियर टू देम। ओके, नाउ in the first quarter of 1857, when the soldiers of the 19th Regiment of Barakpur refused to use the grease cartridges, the leaders were punished and the regiment was disbanded. In March, Mangal Pandey of 34th Regiment fired at his sergeant major and asked his comrades to revolt against the British in defense of their caste and religion. ठीक है, तो थोड़े मोड़े मतलब होने लगे रिवोल्ट, लेकिन स्टार्ट किया एक बड़े रिवोल्ट ने मंगल पांडे से। मंगल पांडे 34th रेजिमेंट में थे, वो आर्मी में थे, एंड ही वाज डिस्टर्ब्ड बाय द यूज ऑफ दीज ग्रीस कार्ट्रिजेस, सो ही रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश, बट ही एंड वन ऑफ हिज एक्टिव कॉमरेड्स वर कैप्चर्ड, ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो यहाँ पे दबाने की कोशिश की गई रिवोल्ट को। In April 1857, 85 soldiers of a cavalry regiment at Meerut refused to use the greased cartridges. They were punished with 10 years of rigorous imprisonment and disgraced publicly. ठीक, 85 soldiers ने और मना कर दिया कि we are not going to use these greased cartridges. तो उनको क्या किया, 10 साल की कैद सुना दी गई और उनको डिस्ग्रेस भी किया गया पब्लिकली। On May 10, the 3rd Cavalry Regiment at Meerut revolted and the infantry also became a party to it. The soldiers released the prisoners, killed some English officers and civilians and marched to Delhi. अब यहाँ से देखो थोड़ा ज़्यादा लेवल पर रिवोल्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। They captured Delhi on May 12 and Bahadur Shah too was proclaimed the Emperor of India. ठीक, इसमें क्या हुआ, सोल्जर्स ने प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया, ठीक, और कुछ इंग्लिश ऑफिसर्स को भी मार दिया। ओके, और सिविलियंस क्या किए, सिविलियंस दिल्ली में जाके मार्च किए और बहादुर शाह सेकेंड को एम्परर ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया और May 12। ओके, नाउ स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट। लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया एंड बिहार जॉइन द रिवोल्ट। ठीक, तो रिवोल्ट में पहले ये मीरठ का एरिया था, अब पूरा नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया और बिहार ये सब जगह से ज्वाइन कर लिया गया रिवोल्ट में। द इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट वर दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी एंड आरा इन बिहार। In Delhi, the aged Emperor Bahadur Shah was the symbolic leader, but the real command was with the court of soldiers headed by General Bakht Khan at Kanpur. ठीक, बहादुर शाह सेकेंड को बना दिया गया था, was declared the emperor, मगर सारा काम because he was old, बहादुर शाह was old, so all the work, real command was in General Bakht Khan जो कि कानपुर में थे. The revolt was led by Nana Sahib, the adopted son of the last Peshwa. ठीक, रिवोल्ट को लेड कौन करा था, नाना साहेब। The chief responsibility of fighting on behalf of Nana Sahib fell on the shoulders of Tatya Tope, one of his most loyal commanders. Tatya Tope won immortal fame because of patriotism, determined fighting and skillful guerrilla operation. ठीक, नाना साहेब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तात्या तोप पे, जो कि इनका वन ऑफ द मोस्ट लॉयल कमांडर्स था। One of the greatest leaders of the revolt was Rani Lakshmi Bai of Jhansi. She opposed the British and sacrificed her life of the motherland. Tales of her bravery and courage and military skills have inspired India ever since the revolt of 1857. तो अब देखो रानी of Jhansi, that is Rani Lakshmi Bai, was included in the revolt of 1857. Okay, and she was very brave and she lost her life in this revolt. Kuwar Singh, a zamindar of Jagdishpur near Aram,
was the chief organizer of the revolt in Bihar. Though he was nearly 80 years of age, he was an outstanding military leader. कुंवर सिंह भी जो कि जमींदार था जगदीशपुर के एरिया में, उसने he was chief organizer of this revolt. ठीक है. Apart from these leaders in northern and central India, there were popular civilian revolts. The common people too joined the revolt, often lightning with spears, axes, bows, arrows and lathis. ये सब जो मेन लोग थे, रानी लक्ष्मीबाई एंड कुंवर सिंह एंड तात्या तोप, नाना साहब, उसके अलावा जो कॉमन पीपल थे दे वर ऑल्सो रिवोल्टिंग. तो द रिवोल्ट वॉज ऑन अ लार्ज स्केल. ठीक है. तो द ब्रिटिश was shaken by this revolt because it was also the first revolt and it was on a large scale. Okay. Now case study. What does this case study say? Case study is about the revolt at Awadh. The revolt was marked the highest in Awadh. ठीक है. लखनऊ was its capital. अवध में सबसे ज़्यादा ये revolt मार्क किया गया. In Lucknow, the revolt was led by Begum Hazrat Mahal. She proclaimed her minor son Bijri's cousin as the Nawab of Awadh and started a struggle against the British. लखनऊ में कौन इसको लेड करा था? बेगम हजरत महल. The zamindars, peasants and soldiers of Awadh extended their support to Begum. जमींदार peasants सब उनको support कर रहे थे. The rebels, showing remarkable valor, besieged the British residency on July 1857 and soon the whole of Awadh fell into their hands. Maulvi Ahmadullah of Faizabad played an important role in the revolt of Lucknow. Under the leadership of Begum Hazrat Mahal, the forces of local Rajas and Talukdars attacked Lucknow on 30 June 1857 and defeated the British army under the command of Sir Henry Lawrence in a decisive battle of Chinhar. ठीक है. तो बेगम हजरत महल ने जो revolt किया against the British, so she was successful in that. The famous ruins of the Residency stand today at Lucknow with shell marks as a mute spectre to the fighting that took place. ठीक है. It was a like huge fighting, so it is also present over there. Today also we can see over there is a Residency stand today at Lucknow. The struggle continued till the second battle was fought in March 1858 at Alambagh and other places in Lucknow. Here the Awadh forces were defeated and Begum Hazrat Mahal refused to surrender. सेकेंड बैटल जो फॉट हुई मार्च 1858 में आलमबाग में, वहाँ पे ये अवध की फोर्सेस डिफीट हो गई, लेकिन बेगम हजरत महल ने सरेंडर नहीं किया. ओके.